सकते हैं, क्योंकि धारा 370 टेम्परेरी थी, ट्रांजिटरी थी, ये कभी भी परमानेंट नहीं थी। इस बात को अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिर एक्सेप्ट किया है। For which Article 370 was introduced, subsisted even after the Constituent Assembly ceased to exist. This is recognized by the judgment of the Constitution Bench in Sampat Prakash. Fourth, the effect of the President declaring under Clause 3 of Article 370 that Article 370 ceases to exist is that the provisions of the Constitution which apply to every state in the first schedule would equally apply to the state of Jammu and Kashmir. Articles 371D and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 371D and Article 370 Clause 3, even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. Holding that the power under Article 370 Clause 3 cannot be exercised after the dissolution of the Constituent Assembly would lead to the freezing of the process of integration, contrary to the purpose of introducing the provision. And 5, if the contention of the petitioners on the interpretation of Article 370 vis-à-vis the dissolution of the Constituent Assembly is accepted, then Article 370 Clause 3 would become redundant and would lose its temporary character. The President, while deciding if the power under Article 370 Clause 3 must be exercised, determines if the special circumstances which warranted a special solution in the form of Article 370 have ceased to exist. This is a policy decision which completely falls within the realm of the executive. The court cannot sit and appeal over the decision of the President of India on whether the special circumstances which led to the arrangement under Article 370 have ceased to exist. However, the decision is not beyond the scope of judicial review. It is settled law that the exercise of executive power can be challenged on the ground of malefides. The slew of constitutional orders issued by the President under Article 371D, applying various provisions of the Constitution and applying provisions with modification, indicate that over the course of the last 70 years, the Union and the state have, through a collaborative exercise, constitutionally integrated the state of Jammu and Kashmir with the Union. This is not a case where only Articles 1 and Article 370 of the Constitution were applied to the state of Jammu and Kashmir, and suddenly, after 70 years, the entire Constitution was being made applicable. The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President in exercise of the power under Clause 3 of Article 370 is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. Having concluded that the power under Article 370 Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the power under Article 371D cannot be issued to apply all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir. We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D. The power under Article 371D can be used to apply one provision, more than one provision, an entire part of the Constitution, or all the provisions of the Constitution, that is the entire Constitution. The provision does not make a distinction between one or all provisions of the Constitution. Non-application of mind cannot be claimed merely because CO 272 applies all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir in one go. The next issue is the challenge to CO 272
on the ground that the सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाना वैलिड है, ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 370 को वो हटा सकते हैं, यानी कि 370 को जब हटाया गया वो वैलिड था, यानी कि कोर्ट ने इस बात को माना है। लेकिन ये एक जजमेंट है जो जस्टिस जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का डिसीजन है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 370 को हटाना प्रेसिडेंट के रूल के अंडर आता है, यानी कि प्रेसिडेंट उसको कर सकते हैं। कोर्ट ने उसको वैलिड माना है। इसके अलावा कि ये पूरा जो आर्टिकल 370 जिसको हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में अप्लाई होता है, और इसके अलावा जो डिसइंटीग्रेशन किया गया है वो क्या हर जगह अप्लाई होता है, उस पर कोर्ट फैसला सुना रहा है। लेकिन ये बड़ी बात इस वक्त कोर्ट की तरफ से ये कही गई है, जिसमें कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोर्ट कैन नॉट सिट ऑन एन अपील ओवर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसला लिया है जिसमें उन्होंने 370 को हटाया, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया, कोर्ट उस पर बैठकर सुनवाई नहीं कर सकता है, कोर्ट उस अपील पर बैठकर फैसला नहीं सुना सकता है, यानी कि कोर्ट ने इस बात को वैध माना है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना सही था। of India. Third, since the effect of applying all the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir, to Jammu and Kashmir through the exercise of the power under Article 371D is the same as issuing a notification under Article 370 Clause 3, which the President has the power to unilaterally issue, the principle of consultation and collaboration and not required to be followed. Fourth, the exercise of power is mala fide only if power was exercised with an intent to deceive. Deception can only be proved if the power which is otherwise unavailable to the authority or body is exercised, or if the power that is available is improperly exercised. Since the concurrence of the state government was not required for the exercise of power under Article 370(1)(d) to apply all provisions of the Constitution to the state, the President securing the concurrence of the Union of India on behalf of the state government is not mala fide. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that it is ultra vires Article 370(1)(d) because it modifies Article 370. We have held that the modification by CO 272 to Article 367 as it applies to Jammu and Kashmir had the effect of amending Article 370 and is thus ultra vires Article 370(1)(d). We have reached this conclusion for the following reasons. First, recourse must be had to the procedure contemplated by Article 370 Clause 3 if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. No other procedure may be utilized to amend Article 370. Second, the rule of interpretation that a power under a statute must be exercised in accordance with the provisions of that statute and in no other manner is undoubtedly applicable to the Constitution. Third, from precedent, including Shankari Prasad Singh, Sajjan Singh, Quixote Holohan, and Rajendra Shah, it emerges that the following aspects are of significance when assessing whether a change has been made to a provision of the Constitution. 1. A change may be either in terms of or in its effect. 2. A change can be said to have been made even if the language of the concerned provision is not directly amended by adding, subtracting, or modifying the language. This is a change in effect. And 3. If the effect of an amendment is to change a provision, such effect must be significant or appreciable. And 4. The substance of a change is more important than its form. Second, an assessment of whether a constitutional order amounts to a modification and consequently whether the procedure under Article 370 Clause 1 or under Article 370 Clause 3 ought to have been followed depends on this standard. Third, the effect of a provision of law is as important as its form. While the change sought to be made by paragraph 2 of CO 272, बड़ी खबर आपको बता दें, 370 हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि यह फैसला सही था, ये एक टेम्पररी प्रोविजन था और इस पर ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी गौनिका दे रही है। गौनिका, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि 370 ये एक टेम्पररी प्रोविजन था और इसे हटाने का फैसला केंद्र सरकार का सही था। बिल्कुल मीनाक्षी, ये सवाल उठाए गए थे प्रेसिडेंट की
मंशा पर सवाल उठाए गए थे कि वो मैलाफाइड है, लेकिन अब कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि प्रेसिडेंट की मंशा बिल्कुल भी मैलाफाइड नहीं थी, क्योंकि एक टेम्परेरी प्रोविजन था, इसको हटाया ही जाना था। इसीलिए इसको हटाया जाने के पीछे जो प्रेसिडेंट की मंशा थी वो बिल्कुल भी मैलाफाइड नहीं थी। ये वर्ड यूज किया है कोर्ट ने, यानी किसी भी तरीके की कोई भी गलत मंशा इस आर्टिकल 370 को हटाए जाने के पीछे नहीं थी। ये कोर्ट ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑल द प्रोविजन, यानी कि ये बार बार सुनवाई के दौरान कहा जा रहा था कि अगर किसी भी तरीके का प्रोविजन यानी कि 370 को अगर हटाया जाना है और इसके अलावा डिसइंटीग्रेशन करना है, तो इन सब चीजों को लेकर जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति होनी जरूरी होती है। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट की सहमति की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 370 को प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से हटा सकते हैं और उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया, क्योंकि ये टेम्परेरी प्रोविजन था। ये सिर्फ वॉर के क्राइसिस के दौरान उस वक्त ये फैसला लिया गया था कि 370 अप्लाई किया जाए, लेकिन वो 370 तब सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाती उसको हटाया जाना था, लेकिन वो क्योंकि सिचुएशन लगातार वैसी बनी रही जिसके बाद इसको हटाया नहीं गया, लेकिन क्योंकि ये टेम्परेरी प्रोविजन था इसको हटाया जाना था और इसको हटाया गया और इस फैसले को कोर्ट ने सही करार दिया। तो the Constitution of Jammu and Kashmir. The gaps left by the non-application of some parts of the Constitution of India were filled by the Constitution of the state. After the abrogation of Article 370, as it stood before the issuance of CO 272 and CO 273, and the application of the entirety of the Constitution of India to the state, the Constitution of the state does not fulfill any purpose or serve any function. Hence, the implicit but necessary consequence of the application of the Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir is that the Constitution of the state is inoperative. On the validity of Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3, this is what we have said. A 5-judge bench of this court in Babulal Parate held that the views expressed by the legislature of the state under the proviso to Article 3 are not binding on Parliament. If the views of the state legislature were binding on Parliament, which is not the case, there would be scope for debate on whether Parliament, in exercise of its powers under Article 356(1)(b), could have substituted its views for the views of the Legislative Assembly of the state. However, the views of the legislature of the state are not binding on Parliament in terms of the first proviso to Article 3. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory to begin with. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 is valid and not mala fide. The next issue is on the validity of the suspension of the second proviso to Article 3 as applicable to Jammu and Kashmir. When the reorganization bill was introduced, that is on 5 August 2019, the second proviso to Article 3 as it applied to the state of Jammu and Kashmir ceased to exist because of CO 272. Thus, the issue of whether the second proviso to Article 3 could have been suspended in exercise of the power under Article 356(1)(c) does not survive. The next issue is the validity of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The Solicitor General, appearing for the Union of India, submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a union territory is temporary. The Solicitor General submitted that the status of the Union Territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. In view of the submission made by the Solicitor General that statehood would be restored of Jammu and Kashmir, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. The status of Ladakh as a Union Territory is upheld because Article 3A, read with Explanation 1, permits forming a Union Territory by separation of a territory from any state. This court is alive to the security concerns in the territory. की बड़ी खबर आपको बता दें, धारा 370 को रद्द करने, 35 आर्टिकल को रद्द करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है और कुछ बातें जो निकलकर स्पष्ट सामने आ रही है
वो ये कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये भारत का राज्य है, इसलिए केंद्र सरकार हर वो फैसला ले सकती है जैसे वो बाकी राज्यों के लिए लेती है, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर के लिए भी हर वो निर्णय लिया जा सकता है। जो 5 सवाल याचिकाकर्ताओं की ओर से खड़े किए गए थे कि राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल संविधान बदलने के लिए नहीं किया जा सकता, आज जजेस की ओर से यह कहा गया कि ये किया जा सकता है और ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। आर्टिकल 370 में संशोधन के लिए चुनी हुई सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। इसे भी आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने इस फैसले में स्पष्ट कर दिया कि चुनी हुई सरकार की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति शासन के दौरान भी यह फैसला लिया जा सकता है। 370 को रद्द किया जा सकता है क्योंकि 370 एक टेम्पररी प्रोविजन है, ये एक अस्थायी प्रोविजन है जिसे विशेष परिस्थितियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए था और इसलिए अगर इसे रद्द किया जाता है तो ये गैर संवैधानिक नहीं है, ये संविधान संगत है। संविधान सभा खत्म होने के बाद राष्ट्रपति का आदेश जारी नहीं किया जा सकता, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह स्पष्ट कहा गया कि प्रेसिडेंट जो कदम उठा रहे हैं, जो फैसला ले रहे हैं, उसे जुडिशरी में इस तरीके से चैलेंज किया जाना ये भले ही गैर संवैधानिक दिखाई देता हो, मेलिफाइड इंटेंशन नहीं थे जैसे कि अभी आपने सुना, इसमें ऐसा कोई भी भाव नहीं था जिसे आप क्वेश्चन कर सकें। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना संविधान के आर्टिकल 3 का उल्लंघन है, उस पर भी आपने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सुना। यानी एक एक करके जो सवाल उठाए गए थे उन सभी सवालों को यहाँ पर अगर हम कहें कि ये सीधे मुंह आकर गिरे हैं, ये गलत नहीं होगा। गौनिका हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। गौनिका, जो 5 सवाल थे वो 5 सवाल धराशायी हो गए सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, एक तरीके से कहे 5 सवाल धराशायी हो गए, जिसमें से एक सवाल तो ऐसा था जिसको चैलेंज भी नहीं किया गया था, इसीलिए कोर्ट ने उस पर किसी भी तरीके से कमेंट करने से, फैसला करने से इनकार कर दिया। अब जो आखिरी एक अभी जो अपडेट आया है जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर का जो हुआ, यानी कि उनको जब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, जिसको लेकर ये बार बार कहा जा रहा था कि क्यों आखिर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, लद्दाख को क्यों यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जिस पर कोर्ट ने साफ कहा कि सॉलिसिटर जनरल से जब हलफनामा मांगा गया था कोर्ट में तो उन्होंने ये कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है यूनियन टेरिटरी का वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, उसको सिचुएशन के हिसाब से वहां पर उसको स्टेटहुड दिया जाएगा, यानी कि उसको दोबारा स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा और वहां पर इलेक्शंस होंगे। ये कोर्ट में साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा था और इस एक सॉलिसिटर जनरल का कुछ ऐसा कहना, वो भी लिखित में कहना, ये बहुत मायने रखता है और इसीलिए कोर्ट ने उस बात को माना है। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में ये लिखित में दिया है, इसीलिए इस बात को हम मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा। उसका यूनियन टेरिटरी बनना एक टेम्परेरी उस वक्त का सोल्यूशन था, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं था और यही वजह है कि कोर्ट ने इस बात पर फैसला देने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब लद्दाख को लेकर कहा गया तो लद्दाख को लेकर ये कहा गया कि जो सेक्शन 3 है, उस आर्टिकल 3 है, वो अलाउ ये करता है कि किसी भी आप स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका जो डिसीजन पार्लियामेंट ने लिया था वो ठीक लिया था और इस सवाल को फिलहाल कोर्ट ने कहा कि हम ओपन छोड़ते हैं, यानी कि आगे इस पर फैसला और लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस बात को जरूर मान लिया कि यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट किया गया था वो ठीक था और वो टेम्परेरी था, उस बात को भी कोर्ट ने मान लिया। जो बात देवेंद्र, मैं अगर इसकी मूल भावना पर जाऊं कि क्या 370 एक स्थायी व्यवस्था थी या अस्थायी व्यवस्था थी, इसे रद्द किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, आज इसे बड़ी क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। जो व्यवस्था ही अस्थायी है, अगर उसे रद्द कर भी दिया गया तो यह गैर संवैधानिक कैसे हुआ? बिल्कुल मीनाक्षी, और याचिकाकर्ताओं ने जिस तर्क का सहारा लिया था उस तर्क को अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति भी जाने, उसके लिए किसी लीगल माइंड होने की जरूरत नहीं है, सामान्य तरीके से भी समझें तो बात समझ में आ जा रही थी कि डिसीजन क्या होने वाला है। जैसे उनका एक तर्क ये था, क्योंकि संविधान सभा ने ये स्टेटस दिया था, 1957 में संविधान सभा भंग हो गई, इसलिए अब इस स्टेटस को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आप सोचें कि क्या इस देश में ये संभव है कि देश में कोई भी ऐसा प्रावधान जिस पर देश की संसद को ये ताकत ना हो कि वो उसमें बदलाव ना कर सके, उसमें अमेंडमेंट ना कर सके, उसे खत्म ना कर सके या उसको कुछ चेंज ना कर सके। तो ये सारे तर्क अपने आप में ये बता रहे थे, जिसका नतीजा ये था कि कपिल सिब्बल का सुनवाई से पहले, आपने जो याचिकाकर्ताओं के एक वकील वो भी रहे, सुनवाई से पहले जो उन्होंने ट्वीट किया, क्योंकि उनका लीगल माइंड भी बहुत आसानी से ये बता रहा होगा कि जिन आधारों पर ये चैलेंज किया गया था वो बहुत सतही है। और इसके पीछे वजह मीनाक्षी ये थी, इस फैसले को लेने से पहले
गृह मंत्री अमित शाह ने 1 से 1.5 महीने तक विधि विशेषज्ञों के साथ गहन तरीके से मटेरियल लेके इसका अध्ययन किया था और उसके बाद वो इस नतीजे पहुंचे थे। तो समझा जा सकता है कि उनको भी बखूबी मालूम था कि कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाएगा, लेकिन चैलेंज करने से पहले उसकी वैलिडिटी की जांच कर ली गई थी, इसलिए फैसला लिया गया। और बड़ी बात ये कि राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही आर्टिकल 370 पर कोई फैसला ले, ये भी जरूरी नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया। कौनिक आपके पास बिल्कुल मीनाक्षी, अब क्योंकि कंक्लूजन्स अपने जजमेंट में दिए हैं अब सीजीआई ने, उन कंक्लूजन्स को मैं एक एक करके बताना चाहूंगी कि जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि वहां पर किसी भी तरीके की संप्रभुता नहीं थी, किसी भी तरीके की आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। और आर्टिकल 370 एक फीचर था एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का, ना कि संप्रभुता का, यानी कि 370 से आप